Hello, Assalamu alaikum, Pakistan. Welcome to Uncle's Talk Show. Today we have another session regarding learning languages, and I would like to request Uncle to teach our social media viewers, about social dialoguing between the two unknown person, how they can talk in three international languages. Yes, Uncle. Okay, I got your question, and certainly it's a pleasure to be in the program again and let you know about these three languages as we started a couple of weeks ago, how to teach these three languages, which is our goal to make a base for our viewers if they are interested in languages, if they are language lover. That's our beloved language Urdu, then English, then Spanish. So today I'm going to teach you between the two unknown people. Like the first one I'll call him one or her one, and the second one is two. So it's a small dialogue, just pleasantries. In English you can call it pleasantries. और ये एक दूसरे की खैरियत पता करना, एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा जानना, तारुफ की ज़बान, तो वो मैं आपको सिखाता चलूँ, अंग्रेज़ी में भी, उर्दू में भी और स्पेनिश में। ऑर्डर ये है, पहले उर्दू में, बाद में अंग्रेज़ी में, उसके बाद स्पेनिश में है। और ये जो दो अशख़ास बात कर रहे हैं, उसमें एक नंबर वन है, फर्स्ट पर्सन, द सेकंड पर्सन इज नंबर टू। ओके, नंबर वन उर्दू में पहले बोलूँगा, फिर अंग्रेज़ी में, फिर स्पेनिश। आपका क्या हाल? In English, how are you? In Spanish, ¿cómo está usted? Person number two, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। और आप? I'm fine, thank you. And you? Yo estoy bien, gracias. ¿Y usted? Person number one again. आपकी सेहत कैसी है? In English, how is your health? In Spanish, ¿cómo está tu salud? Person number two. मेरी सेहत ठीक है. My health is okay. In Spanish, mi salud está bien. Now again, person number one. आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? In English, where are you from? In Spanish, ¿de dónde es usted? Person number two. मैं नॉर्थ अमेरिका से हूँ. English, I am from United States. In Spanish, yo soy de Estados Unidos. ये हो गया. उसके बाद पर्सन नंबर वन. तो आप हमारा मुल्क विज़िट कर रहे हैं. अंग्रेज़ी में हो जाएगा, आर यू विजिटिंग माई कंट्री? स्पेनिश में हो जाएगा, usted está de visita a mi país. Usted está de visita a mi país. पर्सन नंबर टू. जी जनाब, मैं आपका मुल्क विजिट कर. Yes, I'm visiting your country. In Spanish, sí, estoy visitando su país. Number one, आपसे अभी मुलाकात हुई, आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे? I just met you, but would you like a cup of coffee? Apenas lo conozco, pero le gustaría una taza de café. Person number two answers Urdu first.
Sí, sería bueno. Acepto. Oh. अच्छा ख्याल है, मैं पसंद करूँगा. इंग्लिश में हो जाएगा. Yes, I would like a cup of coffee. I like that. In Spanish में हो जाएगा. Sí, me gustaría tomar una taza de café. Muchas gracias. ये छोटी वीडियो बनाई ताकि आप का इंटरेस्ट बढ़ता जाए और इसको आप बार बार सुने, कमेंट्स भेजें, प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा प्रोग्राम मजबूत होगा. सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये फिर यादों में रह जाएगा, भूल में रह जाएगा. यार ऐसा मत करो, चीज़ों को सीखने की कोशिश करो. Also, Uncle, tell our social media viewers, जी. anyone who would like to learn Spanish or English. Yes. That's a good reminder from you, Tahir, and I would mention in English. I hope you guys understand English. If you want to take some lessons in English or Spanish, you are more than welcome. You can learn both languages, Mr. Faruqi, who I am, and I have the experience to teach these two languages. It's your pick. Give me a call, and we take it from there. Or text. Text me. Yes, you can text me or you can give me the call. Number दे दें. Or comment. You can comment. Or you can write the comment and write in the comments. Write I'll your number. leave you my number anyway. What is your number? Yeah, the number it's a WhatsApp, but you can always call or send me a message for the languages or for any other reason. What is your contact number, sir? The contact number is +92. I will write it down internationally so you can understand. Sorry. Let me speak again. +92 347 299 0294. Again. +92 347 299 0294. Thank you very much, and we are in contact.